well, guys, it's a Friday evening, and generally, when it is Friday, you expect, back in the old times before the pandemic, to be probably sitting in a theater and looking at an amazing blockbuster movie. This was nothing less than that. I mean, till the very end, even if you were supporting Team India, at some point you did feel that this match was going to be in West Indies' favor. What a performance by those two special batters. We will get talking about them, but everybody, welcome back to In the Air on CricTracker with me, Nivedna Prabhu. We're, of course, discussing the second T20I between India versus West Indies, jahan pe India have won by 8 runs. Lekin, at the end of the day, we do know what kind of a tough performance West Indies did put up. And without wasting any more time, let me bring in Gaurav joining me back in the studio. Gaurav, we did, talk about the fact that if they get, then this is the exact kind of West Indian, show that we're expecting from them. But a little bit probably disappointing to see that they couldn't go, the complete way. But what did you think of it? So definitely, I think it was an exciting game, which I have to say, because in the end, the way Nicholas Puran, the way Roman Paul was hitting the ball, West Indies were right in the hunt. Even in the last over, when 24 runs were required of the last four deliveries, and then Powell hit those massive two massive sixes, and it seemed like he is going to do a Carlos Brathwaite, which happened on this very Eden Gardens ground. But fortunately for Indian fans, it didn't happen, and we walked away with a win. But definitely a scare for the Indian team, because whenever dew is going to come, it has been proven that apart from Jasprit Bumrah, I think no other main bowler were missing this match. If we talk about that T20 World Cup happening later this year, I think Jasprit Bumrah is going to come in, and apart from that, I think Mohammad Shami is not a very certain in the playing 11, and so is not Ravindra Jadeja. So against a good batting lineup, against a good bowling lineup, West Indies have performed really well, and they were like inching towards a victory. And unfortunately for in their side, they couldn't do it. But definitely, I think a lot of positive from take from this, and not to forget, West Indies are missing services of the likes of Evan Lewis, Nicholas Nick Puran was here, Hetmeyer is not here, and some of the big guys were not in the team. So definitely, I think good West Indies team with more potent players can be a force to reckon with in the tournament later this year. Right, and I think that particular point about how these two batters, of course, got it going. Powell, of course, the fact that we were speaking about, maybe everybody did think that ultimately we were going to see Carlos Brathwaite's over right there in Eden Gardens once again repeating. But दूसरी तरफ जो हम सबको live पे you have joined us, thank you so much. I see a couple of comments agreeing with you, Gaurav, about the fact that you don't have your star players like Bumrah or Shami, but at the end of the day, India was able to do this. A lot of comments coming in about Bhuvaneshwar Kumar ka experience aakhir mein. It is what really changed things around as well. We'll get talking about all of that. Lekin, let me bring on another very happy Indian cricket fan back in the studio. Chirag Manocha joining me. उनसे पूछते सबसे पहले अगर कोई आपको फिल्मी लाइन बोलना हो ये मैच के बारे में क्या होगा चिराग? एकदम पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर मैच था। लगा कि वो डू और डाई वाला मैच है। वेस्ट इंडीज ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन जब वो 2 कैचेस ड्रॉप हुए ना निकोलस पूरन और रॉमन पोवेल का, तो उस टाइम पर लगा था कि मैच गया। ये दोनों मैच जिताने वाले थे, लेकिन हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार ने प्रूव किया कि वो क्यों डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। हर्षल पटेल ने ये भी प्रूव किया कि क्यों इतनी सारी फ्रेंचाइजेस इस मेगा ऑक्शन में उनके पीछे पड़ी थी। 10.75 करोड़ आरसीबी जस्टिफाई किया कि हाँ वो डिजर्व करते हैं इतना अमाउंट। एंड रियली मतलब मैच में पैसा वसूल था, मजा आया मैच देखने में। तो पर कहीं ना कहीं बॉलिंग में हमें सुधार करने की जरूरत है। और रॉमन पोवेल दिल्ली कैपिटल से खेलेंगे, तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं थोड़ा खुश होंगे। दो इंडिया मैच जीता, लेकिन ऋषभ पंत के लिए खुशी डबल है क्योंकि रॉमन पोवेल खेलेंगे डीसी से। Okay, this is of course, even I was thinking about that because Puran had a very hot and cold Indian T20 league, agar aapko yaad hai, in 2021. And then he went for that amount that he did in the auction. So I'm pretty sure the franchise that he's playing for will be super, thrilled about it. Lekin, let's get talking about today's match in terms of some top performances. If we could take a look at that on our screens and get, of course, Gaurav and Chirag's viewpoint as well. Start off with Virat Kohli. He has, of course, contributed 52 over there. If we could take a look at another performance, and then Gaurav can summarize 2 performances for us. एक तरफ विराट कोहली का 52, Gaurav,
If you want to Yeah, highlight yeah, I think it was a great performance because he was coming off a lean patch. हम उनके ओडीआई सीरीज की परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि ना उन्होंने रन स्कोर नहीं किए और बहुत टाइम बाद ऐसा ओडीआई सीरीज में हुआ था कि 3 मैच की ओडीआई सीरीज है वहां पर विराट कोहली एक 50 नहीं बना पाए, तो एक बहुत ही रेयर इंस्टेंस था। उसके बाद पहले T20I में आई थिंक वो काफी अच्छे लगे लेकिन 17 रन पे आउट हो गए। But the way he started off innings in this particular match, I mean, he was positive from the outset because हमको भूलना नहीं चाहिए काफी डिफिकल्ट ट्रैक कंडीशन था। इनिशियली जो वेस्ट इंडीज के जो पेसर्स थे उनको काफी मदद मिल रही थी इवन पिच से, और हमने देखा था ईशान किशन जो कि काफी धाकड़ बल्लेबाज है वो आउट हुए थे 2 रन बना के, वो भी 10 गेंद खेल के। ऐसे कंडीशंस काफी दिखाती हैं कि ना ट्रैक में कितना चैलेंज था एज अ बैटर के लिए और कितनी हेल्प थी न्यू बॉल बॉलर के लिए। वहां पर आके जो विराट कोहली ने जो इंटेंट दिखाया है आई थिंक वेस्ट इंडीज बॉलर्स को जो बैकफुट पे भेजा है, तो ऑब्वियसली वी कांट डिनाई द फैक्ट कि इतना बड़ा टोटल बना है, दैट्स बिकॉज ऑफ ऋषभ पंत एंड वेंकटेश अय्यर्स बिग हिटिंग। बट हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो इनिंग्स को एंकर किया, जो पूरे इनिंग्स को बेस दिया वो विराट कोहली ने दी थी। तो डेफिनेटली आई थिंक दीज आर ग्रेट साइंस फॉर इंडिया बिकॉज काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठे गए थे जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी सारे फॉर्मेट की। सो डेफिनेटली द ट्रांजिशन इन द इंडियन टीम, बट एक चीज काफी सर्टेन है इस पर्टिकुलर नॉक के बाद, दैट विराट कोहली इज इन अ सर्टेन फ्रेम ऑफ माइंड। वो आज भी डिटरमाइंड है टीम इंडिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए। एंड एक बार हमने विराट कोहली को हमेशा देखा है कि कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, 50 के ऊपर का एवरेज है तीनों फॉर्मेट में। इस इनिंग से वो शैकल जो था वो ब्रेक हो चुका है आई थिंक, और आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मैच ऑनवर्ड्स वी कैन सी एन इवन बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। you know, no matter how much you really speak about Kohli, everyone will still talk about the fact that we're waiting for that 100. Okay? I mean, that is how it is going to be. But you're right. वो At the end तो of nation wants to know, वो तो sorry, बोल रहे थे? I couldn't hear you. नहीं, मेगा वो तो सवाल बन चुका है, घर घर में बच्चा बच्चा पूछता है, नेशन वांट्स टू नो ना विराट कोहली का 71st सेंचुरी कब आएगा। Correct. I'm राइट pretty sure even Kohli has no answer to that, but continue to talk about, good performances. Let's take a quick look at what Roston Chase and Rishabh Pant were able to do in today's match. Rishabh Pant having scored 52 runs. We just spoke about him. If you could take a look at Roston Chase, who's also proven to be really effective in this particular series. यहाँ पे 4 ओवर में उन्होंने 3 विकेट लिया है, and I think Gaurav, you did speak about Roston Chase as well earlier in the pre-match analysis, proving to be quite lethal for the West Indian side. राइट So definitely, I think Roshan Chase, not to forget, he's an all-rounder, not just an off-spinner. He's an all-rounder, and an all-rounder, especially in this format of the game, is a great commodity because आपके पास एक bowler है जो कि 4 ओवर आपको consistently देगा, 20 में से 4 ओवर अच्छे देगा, and we can see his Dikrom rate 6.25 is an excellent. We're talking about a game where India scored over 180. वहां पर आप अगर ना 6 से भी कम, आई मीन 7 से भी कम का इकोनॉमी रेट अगर मेंटेन कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। तो आई थिंक जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है लेटर दिस ईयर, वहां पर ना जो इकलौता स्पिनर आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टैक्स में चलते नहीं है, इनकी हाइट लंबी है, काफी अच्छा बाउंस मिलेगा। सो डेफिनेटली आई थिंक ही इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, और एक एडिशन अलाउ करते हैं जहां पर भी अगर वेस्ट इंडीज को एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना हो, सपोज इन फॉर्म ऑफ शे होप और ब्रेंडन किंग और डेरन ब्रावो और ड्वेन ब्रावो, आई मीन एनीवे, आई मीन काफी अच्छा एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। सो डेफिनेटली आई थिंक उनका एक यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना एक अच्छा साइन है वेस्ट इंडीज टीम के लिए। अगर वो बल्ले से और ज्यादा अगर परफॉर्म करने लगे, थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करने लगे, तो आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट एसेट। राइट Okay, talking about all the top performances, ek taraf, we'll also take a look at the scorecard and Roman Powell's contribution as well. लेकिन आप सब मुझे comment section में बताइए what was the highlight of the match according to you. आपके opinions मुझे comment section में बताइए. I'll also ask Chirag and Gaurav. But the match result being India has won by 8 runs. Of course, Roman, of course, contributing with that 68 not out of just 36 balls. Bhuvaneshwar Kumar 1 for 29. Dusri taraf, Pant scoring 52 not out, and Roston Chase 3 for 25. So coming back to the match, and of course coming to this particular, performance that really changed everything. Chirag, आपसे पूछते हैं सबसे पहले आपको turning point of the match क्या लगा, and which was that one moment that you thought, okay, maybe this is not going to go in our favor, or maybe it is going to go now. वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो ये वाली इनिंग बहुत एंजॉय करी रोमन पवेल की। एकदम ऐसा था कि पैसा वसूल कहते रहे कि हाँ वो पैसा वसूल था इन्हें देखना, और जिसके लिए आप T20 देखते हो ना एंटरटेनमेंट के लिए, वो इस इनिंग्स में था। और वेस्ट इंडीज से एक फाइट देखने को मिली जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो देखने को मिलेगी इस डू और डाई वाले मैच में, और वो देखने को मिली। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने एंजॉय किया सब।
Okay, I think like the rest of us have enjoyed this. Also, what did you all think about? I know on social media, and I will also get talking about what's happening on Social Tracker, but a lot of that, discussion being about how Bhuvaneshwar Kumar ended up, dropping his own, the catch Catch, for हाँ. went on to kind of was expensive, but Ravi Vishnu getting it. He seems to clearly be getting the favorite tag of this particular series so far. Lekin aap sab bataiye in the comment section. What did you think was the turning point, irrespective of whether you were supporting West Indies, yeah, India? Are we talking about what's happening? Let's look at what's happening on Social Tracker. What is the conversation like? RP Singh saying always a better side to see Virat Kohli scoring fluently, but what was more satisfying was aggressive and sensible approach of Pant and Venkatesh Iyer in the final overs. I know Gaurav and our other guest Pratyay would be looking at the word sensible and Pant, the approach, which we don't really discuss True, that a true, lot. true. I was going to say is reckless, but that's the one tweet. If we can move on to the next one and then get okay, good on you, Virat. Brilliant. ठीक है. Chirag, if you want to take over and tell our viewers की social tracker पे Sure. क्या है? तो देखते हैं अभी क्या है सोशल ट्रैकर पर. इसके बिना हमारा लाइव अधूरा है वैसे, चाहे प्री हो पोस्ट हो, मतलब इसके बिना मजा नहीं आता. ये वो है गुलाब जामुन में अगर मीठा ना हो ना तो वो मतलब. तो लेट्स Irfan Pathan, important partnership from Rishabh and Venkatesh came at a tricky time of the game. बिल्कुल सही बात है. और ये जो ऋषभ और वेंकटेश के बीच एक ऐसा पार्टनरशिप देखने को मिला, बहुत काम कंपोज और पेशेंटली, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत अच्छे से खेले. रोहित शर्मा पैनिक्स टू मच एज कैप्टन, किकिंग द बॉल एक्सेट्रा. यस, भुवी ड्रॉप द कैच बट मैच इज स्टिल ऑन. हाँ, लेकिन किक कर दिया तो क्या हुआ, वो फ्रस्ट्रेशन में कई बार हो जाता है. इट्स नॉट अ बिग डील. नॉट फिनिश्ड. हाय भुवनेश्वर कुमार, ये बिल्कुल सही है. खत्म नहीं हुआ. शेर मतलब थोड़ा पीछे लेता है कदम वो, ताकि वो आगे मतलब बढ़ सके और लंबी जंप लगा सके. लॉस्ट टू रोहित शर्मा भी लाइक, मैं नहीं आ रही तेरे पास. सही बात है. मतलब हार तो ऐसे है. हा हा हा. हर्षल पटेल राइट नाउ. ओ बच गया. और RCB इज्जत. हाँ, लास्ट ओवर में सही बात है, इज्जत बच गई. Okay, that is what was happening on Social Tracker and Meme Tracker. Before we wrap up for the day, I'm just going to take two comments over here. Gyan saying that Bhuve ne jo wicket liya, wo important tha match ka, and Gyan saying Gyan once again saying कि विराट के कुछ matches बेकार जरूर गए, but अभी रनों को भूखा है वो, इंडिया को आगे ले जाएगा. Okay, sorry for that bad Hindi Gyan. That's all we have for you in today's post-match analysis of the second T20I. Lekin na bhulega to join all of us at CricTracker as we're going to be coming back to discuss the third T20I. Until then, from Gaurav, Chirag and me, see you, take care and stay safe.